Tobu headquarter the intoxicating substance ki hatai dubule chuli thaka campaign de cognac Newpus Shekho Kong pra 16 cartons biya kuri dishe aro Indian made foreign liquor rum ke seize kurishe enforcement operation de. Association of Power Engineers Nagaland General Conference Kohima te May 21 din lua homoy Power Minister KG Kanye pra khota kurishe notun executive team 2025 to 28 tenure nimite chunishe. India laga international movement to United Nations laga 3 din conference to Kohima G Rio School de shuru hoise. Even the Minister KG Kanye aro Ambassador Jitendra Nath Mishra to chief guest thakiche. Churachandpur district Manipur te ekta session court te special NIA court designation dishe May 2023 te ula ethnic violence laga case ke sabole nimite idu faisla to Minister of Home Affairs notification te janaise. 18 साल पावर नाथकी किना aha pichite Paham Jila Basti Meghalaya te electricity wapas dilaise 2007 te transformer biya ho jai kina Basti te andhera hi thaki kina aise Chief Minister Conrad K Sangma para Basti te May 22 din visit kurishe. India pra Islamabad Khan cross border terrorism support ke khotom nakra tak Pakistan lagode Indus water treaty to any suspend de rakhibo koise Jamila to Pahalgam terror attack pichite aha laga ase. Hello viewers, Chanchan Kasar Nltv Midday News se apnan sabke swagat kore ase IB khobor khan janai do. Tobu headquarter de intoxicating substance ke hatai dibole chuli thaka campaign de Cognac Newpus Shekho Kong pra 16 cartons biya kuri dishe aro Indian made foreign liquors rum ki bi seize kurishe enforcement operation te idu bhanga bhangi to Tobu town student union pra kisim civil society organization leaders samne te kurishe iniga kadam kuriya pra health aro substance free mahol banabole community commitment ke dikhashe. Association of Power Engineers Nagaland General Conference Kohima te May 21 din lua homoy Power Minister KG Kanye pra billing practices te reform electricity charges te minimum rate bodli ki chulai thaka mangyubole opor khota kurishe tai koishe ki billing accountability na thaka pra smart prepaid meter implement kuribole digdar hoy ase Kanye pra central sarkar laga rooftop solar PMSG MBY scheme aro local generation project ke adopt kuribole janaise aro engineers ke itu initiative te prioritize kuribole cooperate kuribi koishe APN President Engineer Kasho Chishi pra Engineering Ethnics Technological Innovative te update thakibole aro cadre reviews kuri kina workforce initiative banabole khota patishe Power Secretary Asangla MT pra engineer laga professionalism aro smart technologies adopt kuribi kina encourage kurishe aro notun executive team 2025 to 2028 chunishe kote engineer Monlomo Kikon ke president banaise. India laga international movement to United Nations laga 3 din conference to Kohima G Rio School de pra shuru hoise even though Minister KG Kanye pra aro Ambassador Jitendra Nath Mishra pra chief guest hoikina loise Deputy Commissioner Henok Bhucham to guest of honor thakishe aro even to candle light ceremony loikina shuru kurishe Minister Kanye pra IIMUN's role of unity aro peace promote kriya nimite praise kurishe aro DC Bhucham pra combat misinformation te critical thinking thakibole nimite bi emphasize kurishe IIMUN to youth lead organization ekta ase juntu 35 communities te 220 city student conference kan ke host kore aro 10 million upor students kan ke globally impact kore goishe ido upor reporter Grace laga detail report sai sabo. When you speak to an audience like yours, like you, I see that there are parents sitting in the first 3 or 4 or 5 rows and behind them are students, and I'd like to congratulate you on your magnificent clothes
indigenous from the region, your identity, very proudly your identities, and this is not something I see everywhere in India, honestly. And this is something I admire about Nagaland. This is my 4th visit to Nagaland. The 3rd visit to Kohima, I went to Lumami. So I know a little bit about Nagaland. And I'm looking forward to that music out there, your fantastic bands and music. But what do I tell to a bunch of parents and students? I had not prepared a speech. I don't prepare speeches. I like to speak for the moment and in the moment. You know, we had the meeting, the Global Principal Forum this afternoon, and I think, Srinidhi, you mentioned curiosity. Do you know the Mars rover of the Americans, that is called Curiosity? To curiosity, I would add imagination. I was telling the story about the Pushpak Viman on which Ravana, after abducting Sita in the Ramayana, flies towards Lanka. Pushpak Viman, a chariot, a flying chariot. Well, were there flying chariots those days? Most unlikely, I think, if you go by science. So if there weren't flying chariots, why is Valmiki writing about flying chariots? That's because you have to imagine something that can fly before you create something that can actually fly, which is an aeroplane. So you have to imagine. You have to imagine being on the moon before you can actually get there. So imagination of something is very important as curiosity. My dear students and especially dear parents, we talked about 2 things today. What do you do after hours? What do children do after hours? They are not allowed to use cell phones in the school, but they are allowed to use cell phones after hours. It is the responsibility of the parents to regulate the use of cell phones after hours, because, you know, when you are denied something, if I haven't had a rasgulla for like 3 years and I see a bunch of them, I'm going to attack and eat 10 at the same time because I'm desperate to eat rasgullas. So if you're denied something, you're desperate to do it. You have to reach a balance. Not too much or too little. Why I'm saying this is paper, paper and paper. Knowledge is power, knowledge is power, knowledge is power. To that I will add, knowledge is paper, knowledge is paper, knowledge is paper. You know, the clap of hands perhaps indicates that you perfectly understood what I was trying to say. Knowledge is not the cell phone. Knowledge is not the computer. Knowledge comes from the mind, from creation and imagination. And knowledge comes from reading and imagining and perceiving. Knowledge comes from reading literature and philosophy and history. Without history, we are nothing. We are the children of our inherited histories. If we don't know our history, we don't know who we are, where we came from, and what we are about. Don't read on Kindle. Don't read on the computer. And certainly don't play games with yourself and with your friends on WhatsApp and social media. Social media is becoming a compulsive distraction in this troubled time. Please be very careful. And parents, you have as much of a responsibility to regulate, if not eliminate. You can't eliminate something that is so freely accessible to all of us.
So I was talking about reading. We talked about curriculum. Srinidhi mentioned 200,000. Our school has been well associated with IMUN. We have hosted IMUN conferences a number of times in the past years, and it is a great pleasure to host this very special edition of IMUN state level conference once again at our school. I also take this opportunity to congratulate IMUN team on their successful journey of 14 years and wish you many, many more. IMUN is an organization run by the youth with huge network and provide the youth with a platform to voice their opinions. The role of youth, which comprises of more than 50% of our country's population, is of most importance in today's time. Young people now and in the future will play a big role in how our world adapts to all the challenges that we face today. They have the ability to learn and adapt and to bring social reform and improvement in the society. With youth comes energy, innovation, and optimism. These lay the grounds for major positive contributions by our youth. IMUN organizes conferences all over the country and the world at large on very relevant issues, which gives opportunity to young participants to learn about their nation and other nations, to have debate and group discussions, and to come up with some resolution. I would like to encourage all the delegates, the young participants, to make the best use of this IMUN program. Be well prepared for your topics of discussion. Do not hesitate to raise your opinions. At the same time, do listen to others' opinions too. Learn and take as much as you can with you out of these 2 days program. I wish all the participants the very best and hope you will have a very enjoyable and a very good learning experience during the next 2 days of your conference. And once again, thank all of you. Have a good evening. That was such a cute speech. So next, I would like to call upon stage Mrs. Trenia Moore is the Managing Director of GDO School and has been a dedicated educator for over 30 years. Under her leadership, GDO Mokokchung Based Theatre Group Association for Performing Arts and the Articles Pra May 25 Day Ongza Ki Day towards a transformative art laga theme under the Pra 25th Silver Jubilee manabole ase. Iruto hoile Sal 2000 Day Fraternity and Progress Through Virtuosity laga motto dikina bana laga ase aro APAT do 2 decades sishna Nagaland te artistical talents or theatrical expression promote kurishe. Nehru Yuva Kendra logoti para officials attach wa laga ase aro Nagaland Registration of Society ek video de register kurishe. Group to creativity foster kura laga social awareness raise kuribole aro marginalized communities ke through drama aro performance art de support kura laga aim para manabole ase kurishe. May 21 दिन दे Deputy Commissioner Mon Wenyi Konyak visit Kurikina ekta coordination meeting ADC conference holte Gangbura civil society representative aro government officials kan logot loise. Idu meeting te administrative te balpura coordination kura local problems kan ke address kura aro government aro community logote milikina kam kura aro region te bal government hobole meeting loa laga ase kushi. India pra Islamabad Khan cross-border terrorism support kura ki khotom nakura tak Pakistan logote Indus Water Treaty to ini suspend de rakhibo goise. External Affairs Minister spokesperson Randir Jaiswal pra water and blood cannot flow together koikina emphasize kurise. Aro kiki laga dialogue thakile bi Pakistan to Kashmir te India territory occupy kurikina thakade focus koribo lagi kuise.
Etu jamila to hole Pahalgam terror attack pichite aha laga ase kushi. In the last briefing, I had made very clear, I had addressed this issue. Further to that, I have nothing to add, but at the same time, would like to let you know that you are aware of our position, that any India-Pakistan engagement has to be bilateral. At the same time, I would like to remind you that talks and terror don't go together. On terrorism itself, as I had said earlier, we are open to discussing the handing over to India of noted terrorists whose list was given to Pakistan some years ago. I would also like to underline that any bilateral discussion on Jammu and Kashmir will only be on the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. And on the question of Indus Waters Treaty, I am again repeating myself, it will remain in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. As the Prime Minister has said, water and blood cannot flow together. Trade and terror. Director General of Assam Rifle Lieutenant General Vikas Lakhirapra Foreign Laga Operational Preparedness ke access krobole nimite Nagaland visit kurishe aro Dimapur sector te focus krobo kushe. Visit homoy Kashiram Bosti de field inspection be thakishe aro civil military cooperation ke reinforce kuribole Chief Minister Dr. Nefirio logotibi meeting loishe. Lieutenant General Lakhirapra troops kan ki taikhan laga professionalism opor comment kurishe aro community trust laga importance opor bi khota kurishe. Idu iklan hoi kina Northeast region te peace maintain kuribole aro security rakhibole Assam Rifle laga commitment opor bi reaffirm kurishe. It's a Makan Katabar Ligina was I take you in Nagaland TV. Welcome back viewers, I will cover kan aur janai do. For Assam Rifle laga Assistant Commandant Asian Tunki Kon ke duty day talaga bhal kam aur dedication nimite Surya Chakra award dishe. Nagaland Minister Jacob Zimomi pra Kikon ke badai dikina social media de share kurishe aru nation bidor Kikon laga selfless service upor mon khushi janai kina talaga naam uncha kurishe. Itu logot itu award pra Kikon laga gallantry contribution ke highlight kurikina Nagaland nimite bi bishi khushi laga khota ekta ase kurikina janai ase. Major General Atul Kotwal, SMVSM Executive Directorate of the National Health System Resource Center Pura, Nagaland Department of Health and Family Welfare laga officials kan lagode review meeting loishe. Discussion to state health initiative laga implementation aro progress access kura lagate dhyan rakhina kurishe. Idu visit pura healthcare delivery system te collaborative effort enhance kura lagate reflect kure aro Nagaland te central health scheme te effective execution ensure kurishe. Assam Rifle Kanbra May 22 day Red Link ceremony loishe duita Brave Heart Rifleman D Gokul Singh
aro rifleman Avatar Chakma PMJ ke honor kurble kunkan pra duty de thaka homoy jan gavaishe Kohima te unit war memorial TV rifleman T Gokul Singh ke tribute dishe kun pra nijor laga jan sacrifice kurshe insurgent kan logote May 22 te encounter hua homoy de idu nishna nune Manipur TV rifleman Avatar Chakma nimide remembrance ceremony loishe aro Allah kevan te Lower Muduka Nala Diun Changlang district te Kudi local communities veteran aro active personals eki ahikina take commemoration dishe idu even te desh laga heroes aro taikhan laga sacrifice kan ke honor kurikina respect aro unity dikhi paise ceremony to May 23 de khatam hobo Assam Margarita Police Station Bidor Dibong de Thursday din ekta maki bacha ke school laga bahar de kidnap hoise. Bacha laga naam to Aditi Devnan ase aro tai tu Dibong Adarsha May School de 6th grade student thakise. School authorities kan para kushi Kalatkar Khan Boga gari para aise aro school laga bahar de Aditi ki kidnap korise. Mamla upor Margarita Police Station de case dर्ज kurikina ase aro chanbin jari ase. Assam social media influencer Sumi Bora Atmoina judicial custody de thaki kina Thursday din Dibrugarh Central Jail para ulaise. Bora ke multi-crore trading scam laga mamla de giraftar kurikina thakise. Jail para ola karan to Guwahati High Court para bail dia nimite ase kushe. Prime Minister Narendra Modi pra Friday din 2 din lobole thaka Raising Northeast Investor Summit ke khulai dibo ase Summit to May 23 aro 24 lobo jinto pra Northeast State Investment attract korobo aro pura Northeastern State laga Chief Minister Union Minister top bureaucrats foreign diplomats aro 2000 opor delegates policy makers industry leaders aro investor hisa lobole ase Union Minister Jyoti Aditya Scindia pra rupees 4.25 lakh crore submit shuru nakra agi para hi sign kuria lwa aro investor seal kurishi kuikina alan kurishi. We are coming into the summit with, as I mentioned to you, almost 4.25 lakh crores already signed and sealed in the book. We hope to, over the next 2 days, add to that number greatly. In the next 48 hours, you will know the final figure, but on opening day with Prime Minister, we will be heralding close to about 4.25 lakh crores worth of investment. This passion, this determination, and this commitment for the Northeast region is the goal and the effort of Prime Minister Narendra Modi. In the last 10 years, and a region that was always sidelined to the periphery while the nation was progressing, has been brought from the periphery to the mainstream and to the center of India's progress by Prime Minister Narendra Modi. His incessant pursuit towards ensuring that the Northeast region, comprising of the Seven Sisters and Sikkim, which was always consigned to the last frontiers of development, becomes the international gateway for India. And if you look at the geostrategic positioning of the Northeast, it indeed is the gateway not only for India, but indeed is the gateway for the whole world to Southeast Asia and the ASEAN countries. If we go back in time, 500 years ago, this used to be the fulcrum of the main trade route between the rest of the world and Southeast Asia.
And Prime Minister Modi, over the last 10 years, through ensuring greater budgetary support through 10% of GBS, which is accounted for almost close to 6.2 lakh crores of investment directly into the Northeast region, increasing tax devolution to almost 5.2 lakh crores, as well as the huge thrust on infrastructure projects, whether it is road, whether it is rail, whether it is waterways, whether it is power, whether it is telecom. On that fundamental grounding, the Northeast today is primed for development and progress. And on that fundamental grounding, if you talk about the 4 USPs of the Northeast, unique selling propositions. Today, while India is growing at 6.5% GDP growth rate, the Northeast, all 8 states, not one as an outlier, but all 8 states as an outlier, are growing between 12 to 13% on a decadal CAGR basis, which means double the growth rate of India, which means 4 times the growth rate of the global average. Combine that USP with a 4.5 crore population base. Second, third, 65% to 70% of this 4.5 crore population base is below the age of 30, dynamic, ambitious, Akanshi youth population. And finally, extremely important, 80% literacy rate. Today, Mizoram is almost 100% literacy rate, something that very few parts of the world can boast of. So if you combine all of these opportunities, and that's what we have taken to industry, far and wide, international and domestic, the capability of various sectors within the Northeast, whether it is agro, organic, floriculture, horticulture, infrastructure, green energy, IT, semiconductors. And I must report to you that through our number of initiatives, holding an ambassadors meet where a historic 76 ambassadors and high commissioners have attended, evincing international interest, road shows across 9 cities across the length and breadth of India over the last 11 months. From Chennai to Bengaluru to Kolkata to Delhi to Mumbai to Indore to Ahmedabad, across the board. Along Assam laga Golaghat district te Terzitin ekta Royal Bengal Tiger ge mopra morai digina talaga gao laga hissa ke loi jishi koise. Hatsa to Dumukia bosti re hoise aro bosti manu kan pura adult mota tiger ke morai digina claim korise ki etu tiger to manu ke khai aro kunba khan ki hamla korise koikina. Reports hisab bosti manu kan local hatiyar jenika dao lathi aro rods kan chulaikina tiger ke hamla korise. Forest Department personnel kun bosti re punjishe janwar ke bachabole hoilebi hatsa ge rukhabole para nai koise. Local villagers kan pura elek korise ki tiger to bosti de ek moina nishna berai thakise. Bishi jon pura Forest Department ke blame korise tranquilize kuribole aro janwar ke capture kuribole napara nimide. Forest officials hisab ekta case darj hoise ito hatsa laga connection de. हम तो पहले जिंदा देख रहा हम टाइगर को हम हमारा कर्तव्य है ना हम उसको बचाने के लिए हम गया था हम लोग का ये ड्यूटी है हम इसलिए गया था ड्यूटी करने के लिए लेकिन हम वो पब्लिक को हमको क्या कर रहा किया ऐसे बोल रहा बोल के हमको फाइंग मत करो ऐसे ऐसे बोला मैं क्यों हमारा टाइगर हम लेने के आया हम लेके जाएगा हम काजीरंगा में ये बोला लेकिन वो पब्लिक तो हमको माया ना आदमी तो बहुत था हजार 2000 में हो गया 2-3 बात का जो बाकी शरीर का जो अंग भी काट के ले गया लेकिन हम तो ये रखने नहीं पाया क्योंकि हम लोग 8:30 बजे मिला है इन्फॉर्मेशन उसी टाइम हम हमारा स्टाफ भेज दिया कुमटाई सर्कल का अंडर क्या है
दखोटी मुँह आ गया, उसको आदमी भी गया, आदमी को हम लोग कोशिश कर रहा था, वो भी पूरा हम मुंह आके उसको मार दिया। इसके बाद हम अभी जो रूल का भी हिसाब से पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, वो भी रजिस्टर्ड भी करा है, और बाकी जितना रूल हिसाब से कर रहा हूँ, हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसे एक आदमी भी पकड़ लिया। अरुणाचल प्रदेश बिटर वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट लगा थेंगबांग बस्ती लगा मानुखान बस्ती के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लगा किताब दे आने बो निमिदे मन दिगिना काम करे से कुछ दिरोंग एडीसी चौकी दोन दुपरा लीड करिकिना एनवायरनमेंट के बचाव निमिदे मीटिंग एकता लइसे कुछ कोदे लोकल लीडर्स एक्सपर्ट और बस्ती मानुखान आहिसे और एरिया के डेवलप करिबले लगा ऊपर खता करिसे थेंगबांग टू मोनपा कम्युनिटी खान थका जगह से और पुराना पाथर लगा वॉल्स और बिल्डिंग निमिदे जाने जाए इतो लगत स्टेट लगा रिसर्च डिपार्टमेंट और लोकल लगा सपोर्ट पर बस्ती मानुखान ताइखान लगा हिस्ट्री के बचावले करिसे चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर तेगता सेशन कोर्ट के स्पेशल एनआईए कोर्ट डिजिग्नेशन दिशे मे 2023 उला एथनिक वायलेंस लगा केस के साबले इदु फैसला तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर नोटिफिकेशन ते जनाइशे और मणिपुर हाई कोर्ट लगा चीफ जस्टिस के कंसल्ट करा पिछले फैसला तो जनाइशे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरा इतिया हाई प्रोफाइल केसेस साइसे कुंतुदे छोइदा माइकी और बचा कन के जिरबम ते एबडाक और मर्डर केस के छानबीन करेसे साल पावर नाथकी किना आहा पिछदे पहम जिला बस्ती मेघालय ते इलेक्ट्रिसिटी वापस दिलाइशे और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूव क्रिया एकता कदम दिखिशे 2007 ते ट्रांसफार्मर बिया हो जायकिना बस्ती ते अंदिराही थकी किना आइशे चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा लगते लोकल एमएलए सतीश नेज सोंतुम पुरा सात दिकिना बस्ती ते मे 22 दिन विजिट जाइशे और इलेक्ट्रिसिटी वापस दिलाई दिया सकिना रेसिडेंट लगत खता करिशे सिमपुरा नोंगस्पुंग गोरा एलपी स्कूल लगा कंडीशन के भी एक्सेस करिशे और चीफ मिनिस्टर्स स्पेशल डेवलपमेंट फंड विदोर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करि दिबो कोकिना वादा करिशे संगमा पुरा स्टूडेंट्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्पोर्ट गियर भाग करिशे
Chinglen Leshangthem kun Manipur men Sipak Takram team laga captain ase taipura Khelo India beach game day khota kwa homoy talaga team laga khas training regimen opor inside dishe idu lagat Manipur de jhamela thakilebi sarkar pra madad kuri thakabi janaise taipura kushiki tai khan practice kuriado dusra state pura alag wala ase sarkar pura facilities de ase kushe aro idu pura talent ke develop kuri ase aro future de sport kota banabole ummid kuri ase kushe हमारा जो प्रैक्टिस है तो बाकी स्टेट से थोड़ा अलग है मतलब जैसे स्कूल के जैसे हम खेलते हैं वहाँ मतलब मॉर्निंग से इवनिंग से ऐसा करके प्रैक्टिस करता है। कितने साल से आप ये मैं ये नहीं कह के बाकी स्टेट अस्सी नहीं के प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा हमारा परंपरा ऐसा होता है सेपक तकरो में। कितने साल से आप ये स्पोर्ट खेल रहे हो? मैं 15 साल से खेल रहा हूँ। 15 साल। हाँ सर। कैसे आए ये स्पोर्ट्स में पहली बार मैं I played this game when I was in school life and I play for my state and in national level and I play and after that I play for my India in international level and now I'm proudly participated in this Khelo India. I have 3 years. 3 years. Yes sir. Okay. So आपके जो बाकी प्लेयर्स भी हैं वो लोग भी सर्विस करते हैं जॉब करते हैं? Yes sir. This is in income tax department as tax assistant. Yes, sir. My friend. And here is an Assam rifle working in and here is also in custom department as havildar. तो टोटल कितने प्लेयर्स जो स्पोर्ट्स कोटा से आप नौकरी कर रहे हैं? Now in Khelo India. नहीं आपकी जो टीम है कितना 11 प्लेयर होते हैं ना? 11 प्लेयर्स है. I think 6 players are in this service. Okay. No, टोटल प्लेयर कितने हैं आपकी टीम में? 12. 12 प्लेयर में से 6 प्लेयर सर्विस में हैं? Yes sir. Through sports quota? Yes, I'm telling only for boys. In girls we have so many players are playing still in job. Okay. No, Girls. I'm talking about the boys team. Okay. So from 12 players, 6 are in government job. Yes sir. Through sports quota. Yes sir. And women's team में? Women's team I think 9 players are already in service. Service. Yes. From 12. From 12 yes. Out of 12 9 are in service. So ये गेम खेल के आपको थोड़ा मतलब हेल्प भी कर रहा है, so it's helping you in getting jobs. Yes sir, sure, of course. फ्यूचर भी सिक्योर्ड हो जा रहा है. Of course sir. मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो गया है. तो फ्यूचर कैसे देखते हो मणिपुर का सेपक टकरों में? क्या फैसिलिटीज क्या है कि क्या और बेटर होना चाहिए? फ्यूचर्स के बारे में बोलूँ तो बहुत अच्छा चल रहा है और भी बढ़ जा रहा है क्योंकि अभी नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि अभी हर डिपार्टमेंट में हमारा सेपक तकर का गेम की नौकरी ले रहा है. तो पहले तो ऐसा नहीं था, अभी तो हर जगह हर डिपार्टमेंट में हमारा सेपक तकर का स्पोर्ट्स कोटा निकल रहा है. तो सेपक टकरो और फुटबॉल में काफी सिमिलरिटी है क्योंकि फुटबॉल में भी आप किक करते हो, इसमें भी किक करते हो. यस सर. तो मणिपुर लोगों में थोड़ा फुटबॉल का तो इनबॉर्न जीन में भी फुटबॉल है. यस तो सही. वो भी हेल्प करता है आप लोगों को? यस सर करता है बहुत ऑफ कोर्स. क्योंकि अब जब बच्चे होते हो तभी से आप फुटबॉल लेके घूमते होते हैं, हम सब खेलते हैं. हम ये वापस आने के बाद रात को किसी फुटबॉल टीम के साथ फुटबॉल भी खेलता है कभी कभी. तो उससे भी मदद मिलता है? मिलता है सर. अच्छा गवर्नमेंट के तरफ से क्या आपका मतलब क्या स्टेडियम है सेपक टकरो का, कोच वगैरह क्या फैसिलिटीज मिला है? फैसिलिटीज़ बारे में बोले तो अच्छा है, मिल रहा है. मतलब हमारे उधर दोनों स्टेट का भी मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल साई और ग्राउंड है वो तेरा फ्रेश है. फ्रेश मतलब कारपेट जो जिसके लिए कितना है? 4 carpet in the Sai and 4 carpet in the state government. So 8 ग्राउंड अवेलेबल? Yes sir. तो टोटल कितने बच्चे आते हैं खेलने के लिए टोटल ओवरऑल मणिपुर में? It's too much. Like 100 से ज़्यादा? More than 100. 100 we have ट्रेनिज वगैरह 300. Yeah 300 more than 300. सभी मणिपुर के हैं कि बाकी स्टेट से भी आके? All are from Manipur. All are from मणिपुर. अभी मणिपुर का सिचुएशन कैसे है? मतलब वो मेतेई का जो प्रॉब्लम चल रहा था अभी वो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? अभी वो तो शांति नहीं है अभी तक. वो कुकी और मेतेई
आप मैतेई हो? हाँ हम मैतेई हूँ और वो कुकी मैतेई कुकी है कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। टेंशन चल रहा है, मारा मारी हो रहा है। हाँ सर। यहाँ पे आके आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसकी वजह से, डिस्पाइट ऑल दिस ट्रबल एंड ऑल, डिस्पाइट ऑल दिस हार्डशिप। यस सर। तो इससे आप कुछ मैसेज स्प्रेड कर रहे हो? मैसेज कर रहा हूँ कि जल्द से ये वो खतरा ना जल्दी ख़त्म हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ। और शांति बने रहे। हाँ शांति बने जाए। आपके घर से कोई इफेक्ट हुआ है? कोई रिलेटिव में से कोई इफेक्टेड हुआ है? घर किसी का कि किसी का जान हानि हुआ है सर हमारा। किसका? इसका घर जला गया। ओके ओके। और हाय हो कुछ बोलना है सर? उसको बोलना थोड़ा बोलने की प्रॉब्लम है इसीलिए। अच्छा। उनका घर क्या हुआ था? घर वो जला के क्योंकि वो लोग ने जला दिया तो वो रिलीफ कैंप में रह के खेल रहा हूँ अभी। वो रिलीफ कैंप में रह के खेलते हैं? अच्छा। और उनके परिवार वाले? परिवार भी है अभी रिलीफ कैंप में। कितने उनका कुछ जान हानि कुछ नहीं हुआ ना? जान नहीं तो हुआ है। हाँ? जान वगैरह तो नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन सब प्रॉपर्टी वगैरह सब खत्म हो गया होगा? हाँ हाँ सर। अच्छा। वो जॉब करते हैं? जॉब नहीं मिला है अभी तक। अभी तक जॉब नहीं मिला। कितने साल से खेल रहे हैं वो? मिलने वाला है शायद। मिलने वाला? 15 साल। मेरा दोस्त था बचपन से ही मैं वो खेला मेरे। मतलब आपके साथ ही वो भी शुरू किया? हाँ सर। लेकिन उसको जॉब नहीं मिला है? जॉब उसका अप्लाई तो क्या है लेकिन अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ। कस्टम स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है ना ये? नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट सर। पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। अच्छा। तो उसका भी मिलने का चांसेस है? हाँ सर चांसेस है। जम्मू एंड कश्मीर लगा पॉन्च डिस्ट्रिक्ट दे फ्राइडे दिन लाइन ऑफ कंट्रोल दे जू उठिकिना माती नीचे दे लैंडमाइन्स बम थका खान सब फुटिसे कुशे हादसा दे कुन लगा भी मौत होनाय कुकिना ऑफिशियल्स पर जनाइसे और ऑफिशियल्स हिसाब एलओसी उसर दे जू उलाइकिना कृष्णा घाटी सेक्टर लगा पहाड़ एरिया खान सब ते फैलिसे कुशे जिंतु पिछदे आर्मी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स खान लोकल खान लगत मिलिकिना जू के मिटाबले पूरा कोशिश करसे। 27 एक्सलाइट्स के छत्तीसगढ़ लगा नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट दे वेंसडे दिन हताई दिया पिछले डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड सिपाही पर थर्सडे राती डिस्ट्रिक्ट दे रंग और धूमधाम पर मनाइसे नेक्सलाइट्स खिलाफ लड़ाई करा डांगुर कदम दे सिक्योरिटी फोर्सेस पर नंबाला केशव राव आलियास भाषा राजू कुन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लगा जनरल सेक्रेटरी से तय और दूसरा 26 कैडर्स के एकता एनकाउंटर दे अंबुजा जंगल कोट बाजमपुर नारायणपुर इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर दे से तदे वेंसडे दिन मुराई दिशे इधर एनकाउंटर दे डीआरजी लगा दुईटा जवान्स भी मुरिशे। नॉर्थ दिल्ली लगा बुरारी एरिया दे थर्सडे शाम टीनेजर छोकरा एकजन के चाकू पुरा हमला करिकिना मुराई दिया लगा जानबले पाशे इधर हादसा तो बुरारी पिंकी कॉलोनी गांधी चौक दे होइसे कुकिना ऑफिशियल्स पूरा खबर दिसे जुन तो पिछदे पुलिस कान जगह दे पुंजिसे विक्टिम तो 16 साल लगा थकिसे कोसे और बालासवा दे थका मानो से विक्टिम के उसर लगा हॉस्पिटल दे लजिसे होले भी बाचिबो पारा नाय प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पूरा जानबले पाशे कि विक्टिम दु तलगा साथी लगत घर वापस आही थकिसे जितिया दुईटा अनजान मानु आहिकिना तलगा चेस्टी बार हमला करिसे और पलाई दिसे हमला कुरा लगा कारण तो इटा भी जानबले पारा नाय और पुलिस कान विक्टिम लगा साथी आई विटनेस लगत पूछताछ करिकिना छानबीन करिसे। सुप्रीम कोर्ट पर थर्सडे दिन इंटरिम ऑर्डर्स रिजर्व करिसे तीनटा इश्यूज निमित्ते कुंतु हबो वाफ बाय कोर्ट वाफ बाय यूजर नहले वाफ बाय डीड लगा प्रॉपर्टीज डेनोटिफाई आलन ग्रोबले लगा ताकद আছে कोर्ट पर कुनबा प्लेस कुन खान पर वाफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के चैलेंज करिसे इतु खान होना पिछले जनाइसे इंटरिम ऑर्डर्स दे रिजर्व नकुरा आगे एकता बेंच लगा चीफ जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मिशीपुरा सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिबाल राजीव धावन और अभिषेक खान की होनिशे कुन खान पुरा एमेंडेड वाफ लॉ के अपोज कुरा खिलाफ रिप्रेजेंट करिसे और
Solicitor General Tushar Mehta pra center represent kurshi. Center pra AK Kara pra defend kurshi aro kushi ki wafto nature pra hi secular concept ase aro constitutionality resumption ti thakibole naparibo kukina talaga favor ti kushi. Sibalkun pra petitioners ki lead kurshi tai pra law ki ekta historical legal aro constitutional principle pra due ase aro non judicial process pra waf ki kabza kuribole koshish kuri ase kushi. जो वक्फ है वो एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है और वो एक परमानेंट डेडिकेशन है क्योंकि अगर ज़कात को आप देखेंगे इस्लाम के अंदर जिस बात का कोर्ट के अंदर भी ये जिक्र हो रहा है और आज का प्रिंसिपल साहब ने भी इसको बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि ज़कात जो है वो एक परमानेंट डेडिकेशन ऑफ द चैरिटी है ऑफ द ज़कात है और एक तरीके से सदका जारिया है वो तो इस तरीके से और अभी एक और काउंसिल ने वहाँ पर ये बात बोली कि वक्फ जो है वो एक अरबी वर्ड से निकल के आता है जिसका नाम है वकूफ़ा जिसे ठहरा देना है जिसका मकसद तो ये जो है पूरी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मिलता है जहां उन्होंने 600 खजूरों के पेड़ का बाग जो है डोनेट वक्फ किया था और उसके बाद हजरत उमर साहब का मिलता है इंडिया के अंदर जो है 1137 से मिलता है जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने जो है 2 गांवों को मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया था एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम है ये तो इस बात को कल जो उन्होंने ये कहा था कि जो हिंदू एंडोमेंट्स हैं वो ओनली रिलीजियस हैं तुषार मेहता साहब ने तो कल जब हमने डिबेट की उसके बाद आज जो है उन्होंने अपना इंस्टेंस यहाँ पर क्लियर किया है और करेक्ट किया है बेंच को कि उन्होंने इन एडवर्टेंटली गलती से ये बात बोल दी थी अपने आर्गुमेंट में कि हिंदू एंडोमेंट्स जो हैं सिर्फ ओनली रिलीजियस हैं चैरिटेबल या उसके लिए नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि हिंदू एंडोमेंट्स के अंदर भी स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल चलते हैं जैसे वक्फ के अंदर चलते हैं तो उनको जब ये महसूस हुआ उन्होंने करेक्शन रीचेक किया होगा तो आज बेंच के सामने उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया और हम इसी बात को कल से कह रहे हैं कि एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का और ये वक्फ जो है वो क्लियर सीधे सीधे वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 25 एंड 26 की The learned Solicitor General very elaborately with detailed facts and figures and with law. He has explained that none of the amendments brought by way of the Waqf Amendment Act 2025 has violated any right of the Muslims. And every member of the Muslim community has protected right of Waqf. A wrong narrative has been sought to establish and spread all over the country against the establishment. So therefore he has made submissions that neither the fundamental right has been infringed because Waqf is not integral part of Islam. That was his basic contention. Then he said that so far the limitation is concerned, so far making provision regarding scheduled tribe area, that in scheduled tribe area he has gave very detailed elaboration of fact that lot of lands were being encroached and used as work property. Therefore, the scheduled tribe members were feeling marginalized. Therefore, just to protect the interest, because the constitution has given protection to the scheduled caste and scheduled tribe area, therefore this provision has been made so their land cannot be used as waqf without their consent or without their any legal provision. Then the second point they had raised, the Muslim side, that in the tribal area the Muslims cannot create waqf. The learned Solicitor General gave very specific answer to that, that there is no embargo, no prohibition on a Muslim member in a tribal area to create waqf provided he is owner of that property. Thereafter he has made also elaborate submissions regarding the waqf by user, that there is no prohibition. Then he has also made submission regarding registration. Why registration has been made mandatory by way of this Waqf Amendment Act 2025. So he India pra UN Day Tea for Livelihoods Tea for SDGs laga theme bidor day International Tea Day manaise. Edito hoile Rural Employment Day aro Sustainability Day tea laga role highlight kuri kina loise. Ambassador Harish aro global diplomats pra small growers climate resilience aro fair trade laga support upor emphasize kurise. Guest Khan Indian tea juntu Darjeeling aro Assam Khan nishna sampled kure kurise aro India to AI farming aro sustainability certification Khan showcase kurise. Even para sustainable development day tea laga global impact aro potential Khan underscore kuribo ase. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann pra Thursday day Center pra Nangal Dem Day secure kuribole nimide 296 CISF personnel ke deploy kura upor condemn kurise.
aro union government laga move ke question kurise dem te Punjab police prosecuting khan to provide kurikina ase itu karne aro kile CISF personnel khan deploy kurikina ase kurikina sawal kurise tarpra itu laga rupees 8.58 crore annual cost ke criticize kurise aro Punjab pra BBMB aro state fund through pra pay kuribo koikina Manpra Center de Taikhan pra Punjab laga pani de chor kuya homoy accuse kurise aro upcoming Niti Aayog meeting de PM Modi logote issue to view kuribo kuise idu move to Punjab aro Haryana majote pani share kurikina tension ula homoy hoise ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ BBMB ਤੋਂ BBMB ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਡੈਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ ਜੀ ਇਹ CISF ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ BBMB 'ਚ ਟਾਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ 143.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜੋ 143 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ CISF ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ CISF ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ BBMB ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਉੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਉੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 2-1 ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ 2-1 ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ Arunachal East MP Tapir Gao pra Arunachal Pradesh de China pra jaga khan rename kriya do criticize kurise aro meaningless koikina madise tai pra India ke Makhona line laga Loba Tina tribe te jaga khan claim kurble urge kurise Arunachal ke India te ekta part ase koikina reaffirm koikina Gao pra koshiki China to iniga tactics chula do rukai kina 17 countries te dispute resolve kurble focus kuribo lage अभी देखिए इंडिया में हम चाणक्य थ्योरी से चलता है राजनीति समाज चाइना में एक ये फिलोसोफर है इन्होंने कहा कि धीरे धीरे अपना दुश्मन को हाथ लगा के देखो और दुश्मन तगड़ा है तुम हट जाओ और दुश्मन ढीला है आप कब्जा करो ये एक इनका पॉलिसी है तो ये चाइना जितना भी नाम दो अरुणाचल हिंदुस्तान है और अरुणाचल जो है हिंदुस्तान में रहेगा और मैं आपका माध्यम से देशवासियों को बताना चाहूँगा मैकमोहन लाइन का उस पार हमारा लोबा तानी है जिसमें बोकार है निसी है तागिन है मिसिमी है उस जगह को हमको क्लेम करना चाहिए हमारा रिलेटिव वहाँ बसा है लेफ्ट बैंक ऑफ राइट बैंक ऑफ सांगपो जो तिब्बत का नीचे में जो है उसको हम इंडिया क्लेम करना चाहिए तो इसलिए मैं आपका माध्यम से मैं चाइना को यही कहूँगा कि हमारा नदी पहाड़ को नाम देने का बजाय आप हमारा लोबा तानी जहाँ इनहेबिटेंस है उसको इंडिया को दे दो देखिए चाइना को मैं ये कहूँगा कि आप अपना जो पॉलिसी इनको चाइना को 17 कंट्रीज का साथ डिस्प्यूट है एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है ये आउटडेटेड पॉलिसी है ये अपनाओ मत और शांति से अपना डेवलपमेंट करते रहो हम इंडिया वाले इस प्रेशर से कोई काम मानने वाला नहीं है हम अपना राइट को क्लेम करेंगे लोअर पार्ट ऑफ तिब्बत का जो लोबा तानी जहाँ इनहेबिटेंस है उसको इंडिया को वापस करो अभी देखिए इंडिया Panchta Bangladeshi nationals tinta mota aro duita maki konkhan same family para ase taikhan ke Thursday din Patharit War village te durishe illegal India te barber wire border chalai kina broker laga modut para gusha nimite Bosti manu khan pura Madhupur police ke alert koi dikina taikhan ke giraftar kurise
Group kan pra admit kurshi ki tai khan Delhi te jai thakishi kuikina aro brokers kan ge 15,000 Bangladesh taka aro mobile phone dishi kuishi tai khan gusha pra boste manu kan majote halchal ani dishi. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pra Washington DC de shooting hamla pra duijon ki morai dishi itu ke condemn kurishi. Murija majute ekta to Israeli mota Yaron aro American maki Sarah thakishi. Guli mara manu pra Free Palestine goigina chilaishi hamla homoy. Netanyahu pra Western leaders kan ke criticize kurishi Jews khilaf idu threats kan ke rukhabole idu nakura para. Chanbin to itabi chuli goigina jani pashe. A brutal terrorist shot in cold blood a young, beautiful couple, Yaron Lishinsky and Sarah Milgram. Yaron had just bought an engagement ring for Sarah. He was planning to give it to her in Jerusalem next week. They were planning to start a new and happy life together. Well, that tragically did not happen. Yaron and Sarah weren't the victims of a random crime. The terrorist who cruelly gunned them down did so for one reason and one reason alone. He wanted to kill Jews. And as he was taken away, he chanted, "Free Palestine." This is exactly the same chant we heard on October 7th. On that day, thousands of terrorists stormed into Israel from Gaza. They beheaded men, they raped women, they burned babies alive, they butchered 1,200 innocent people and took 251 innocent people hostage to the dungeons of Gaza. A short time afterwards, Chancellor Scholz of Germany visited Israel. And after he saw the horrors, he said to me, "These Hamas terrorists are exactly like the Nazis." He was right. And if they could get away with it, these Hamas terrorists would have slaughtered every last Jew on earth. For these neo-Nazis, Free Palestine is just today's version of Heil Hitler. They don't want a Palestinian state. They want to destroy the Jewish state. They want to annihilate the Jewish people who've been in the land of Israel for 3,500 years. I could never understand how this simple truth evades the leaders of France, Britain, Canada, and others. They're now proposing to establish a Palestinian state and reward these murderers with the ultimate prize. Well, for 18 years, we had a de facto Palestinian state. It's called Gaza. And what did we get? Peace? No. We got the most savage slaughter of Jews since the Holocaust. You won't be surprised to learn that Hamas thanked President Macron and Prime Minister Starmer and Carney for demanding that Israel end its war in Gaza immediately. Hamas was right to thank them, because by issuing their demand, replete with a threat of sanctions against Israel, not Hamas, these three leaders effectively said they want Hamas to remain in power. They want Israel to stand down and accept that Hamas's army of mass murderers will survive, rebuild, and repeat the October 7th massacre again and again and again, because that's what Nltv Midday News sa khobor de dagishe aro ni gan news aro update pai thakibole sai thakibi Naglen TV.